हाँ, तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। आज वीडियो पे हम देखने वाले हैं सेकेंड यूनिट ऑफ डीप लर्निंग का। फर्स्ट यूनिट हमने डीप लर्निंग का कंसेप्ट हमने सामने ही वीडियो को बनाकर आपको भेज दिया है इस चैनल पे। तो आप उसकी प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो। डीप लर्निंग कंसेप्ट बहुत ही इजी कंसेप्ट है guys, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इस पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स आप अचीवमेंट ला सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट करके, मतलब सॉल्व आउट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें बेसिकली क्वेश्चन आंसर आता है और पेपर एग्जाम में पूछा जाता है। वही क्वेश्चन को मैं ट्रेडिंग करके यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। वो इसको थोड़े से प्रिपरेशन कर ले तो अच्छे मार्क्स आप एग्जाम पे ला सकते हो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर कर लीजिए अपने उन दोस्तों के पास में जिनको इस वीडियो की जरूरत है। और आप थर्ड ईयर पे बिलोंग ब्रांच से बिलोंग करते हो, अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पे हो, एएमएल पे, तो आप इस कंसेप्ट को जरूर पढ़िए और शेयर करिए अपने दोस्तों पे। लेट्स स्टार्ट टू कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियोस। स्टार्ट नाउ। ओके, सेकंड यूनिट जैसे फर्स्ट यूनिट हमने पढ़े, अब हमारा सेकंड यूनिट क्या होता है, डिफाइन अ मेजर चैलेंज इन ट्रेनिंग डीप न्यूरल नेटवर्क। कुछ मेजर चैलेंजेस होती है डीप न्यूरल नेटवर्क में, किस तरह से डिफाइन किया है इसमें हमें दिखाने वाले। ट्रेनिंग डीप न्यूरल नेटवर्क इज कॉम्प्लेक्स टास्क बिकॉज दिस मॉडल कंटेन मैनी लेयर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ पैरामीटर, while deep network is powerful, they also face several challenges that can affect their performance and the learning ability. Some of the most important challenges include vanishing gradient, exploding gradient and overfitting. ठीक है, vanishing gradient क्या होता है, कैसे occur when the gradient used to update a weight become very small as they are propagated backward through the network. This make it a difficulty for earlier layer to learn effectively, especially in a very deep network. As a result, the network may have to stop improving even if after many training iterations. On the other hand, exploding gradient occur when a gradient becomes excessively large, causing unstable update and making the training force higher irreactive. ठीक है, another major challenge is क्या होता है, overfitting the where the model learn that training more data too well, including on noise and irrelevant patterns. This result in poor performance होता है instant data. In addition to this issues such as improper weight initialization, poor choice of hyperparameter, and a computational cost also make a training difficulty. मतलब challenges प्रति कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग दिस challenges is essential designing effective deep learning models. Various techniques such as normalizations, regularizations technique use होती है, advanced optimization algorithm are used to overcome this problem and improve a training stability. एक्सप्लेनिंग वेनिशिंग एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम है, अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लीजिए। ठीक है, वेनिशिंग का एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या है, टू क्रिटिकल इश्यूज दैट अराइज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड डीप न्यूरल नेटवर्क, स्पेशली व्हेन जब यूजिंग बैक प्रोपगेशन यूज करते हैं। दिस प्रोग्राम how gradient behaves, they are propagate backwards through multiple layers propagate होता है. In the case of vanishing gradient, the gradient value become extremely small as they move toward early layer. ठीक है, this happen becomes gradient are repeatedly multiplied by small value during the propagation. As a result, the weight in the early layer are updated are very slowly or not at all. They prevent the network from learning. Important feature, especially in the deep architecture. Okay. And contrast exploding gradient occur when the gradient's value grow very large during back propagation. This lead to extremely large weight update causing instability in the training process. The model may fail to converges to produce unpredictable result. ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स एंड सन हाउ ग्रेडियंट फ्लो हुआ, किससे ग्रेडियंट फ्लो होता है, इनपुट लेता है, हिडन लेयर रहता है, आउटपुट लेयर होता है, फॉरवर्ड पास होती है। यहाँ पे लॉस हो गया डेटा तो फिर आउटपुट लेयर पे रिटर्न आता है, फिर हिडन लेयर पे आता है, फिर हिडन लेयर के बाद डेटा फिर से बैकवर्ड फॉरवर्ड पास ग्रेडियंट फ्लो होता है बैकवर्ड पे, फिर यहाँ से आंसर पे करेक्ट होके आउटपुट पे रिटर्न आता है। ठीक है, तो वेनिशिंग ग्रेडियंट क्या होता है, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट क्या होता है। तो वेनिशिंग ग्रेडियंट का यहाँ पे डायग्राम दिया जाए, आउटपुट लेयर, वेनिशिंग ग्रेडियंट, आउटपुट लेयर। मतलब आउटपुट लेयर है, इनपुट लेयर से डेटा गया और वेनिश हुआ, ग्रेडियंट हुआ। और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट के आउटपुट लेयर, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स बाहर के थ्रू ही वो एक्सप्लोड होके आ जाता है, वेनिश इंटर के थ्रू और एक्सप्लोडिंग बाहर के थ्रू, इसलिए ग्रेडियंट होता है, राइट। और ग्रेडियंट फ्लो कैसा रहता है भैया, देख लीजिए। ग्रेडियंट फ्लो लेयर हो गया, डेप्थ हो गया, लेयर हो गया, डेप्थ हो गया, हाई ड्यूरेज ब्रांच विदाउट बैच. This problem is inhibition affect the learning process and convergent network technical such as proper validation, normalization, use stable activation function are really commonly used to address these issues. डिस्क्रैप ओवरफिटिंग इन डीप लर्निंग नेटवर्क का डिस्क्रैप किया गया है। ओवरफिटिंग कॉमनली प्रॉब्लम होता है डीप लर्निंग नेटवर्क पे, where the model perform very well as training data but fails to generalize the new unseen data. जो new unseen data होता है वो जनरलाइज करने के लिए वो fail हो जाता है वो। और दिस हैपन व्हेन द मॉडल लर्न्स नॉट ओनली द अंडरलाइन पैटर्न्स, मतलब इसमें ज्यादा नहीं मॉडल लर्न्स कर पाता है, अंडरलाइन पैटर्न नहीं होता है, बट आल्सो नॉइस एंड रैंडम वेरिएशन प्रेजेंट इन द ट्रेनिंग डेटा सेट। पर नॉइस एंड रैंडम वेरिएशन डेटा रहता है वो प्रेजेंट डेटा सेट से प्रेजेंट होता है। One of the main cause of overfitting is having a very complex model with too many parameter compared to a model of training data. मतलब जो many parameter रहती है जो common training data के लिए। When the model is too powerful, it can memorize the training data instead of learning general patterns. ठीक है,
Another because cause is initially and poor quality data, मतलब अच्छे quality data नहीं थे, which led the model to learn incorrect pattern. ठीक है. Overfitting can be identified by analyze training and validation loss loss का. Overfitting क्या करता है? Identify करता है analyze training और validation loss का होता है. Typically the training loss continue to decrease होती है, while the validation loss state increase after certain points. Thus indicate that the models no longer ज्यादा longer नहीं रहते, improving the analyze ability. ठीक है. To prevent overfitting, techniques such as regular dropout and data augmentation are used. This method helps to model use focus on important features and improve its performance on new data. ठीक है. Understanding and controlling overfitting is essential for building a reliable deep learning system. एक्सप्लेन बैच नॉर्मलाइजेशन बैच नॉर्मलाइजेशन क्या होता है टेक्निक जो है यूज टू इम्प्रूव द ट्रेनिंग ऑफ डीप न्यूरल नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए नॉर्मलाइज करने के लेयर के लिए होता है इट्स हेल्प एस्टैब्लिश एक्सिलेटिंग इन द ट्रेनिंग प्रोसेस बाय इंश्योरिंग द इनपुट डेटा लेयर्स हैव अ कंसिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है ठीक है ड्यूरिंग ट्रेनिंग द वैल्यूज इनपुट लेयर क्या होता है कैन चेंज एज द पैरामीटर ऑफ प्रीवियस लेयर आर अपडेट दिस फिनोमेना इज नोन एज इंटरनल कोवेरिएंट होता है शिफ्ट बैच और नॉर्मलाइज reduce the effect of normalized inputs to data have been means close to zero consistent range. Now allow the network to learn more efficiently. Bad normalized layer भी क्या होता है वाईफाई ये जैसे नेटवर्क होती है और अपने जो डायग्राम है बैच नॉर्मल सिस्टम का मीन्स एंड स्टैंडर्ड फीचर्स आर मूविंग अराउंड बैच नॉर्मल लेयर नॉर्मल इंस्टेंट नॉर्मल ग्रुप नॉर्मल दिया है बैच नॉर्मलाइजेशन आल्सो हायर लर्निंग रेट एंड रिड्यूस द डिपेंडेंसी केयरफुली वेट इनिशियलाइज इट एक्ट ऑफ फॉर्म रेगुलराइजेशन भी होती है रिड्यूसिंग ऑपरेटिंग इन सम केसेस भी होता है ओवरऑल इट इम्प्रूव बोथ स्पीड एंड स्टेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग एंड डीप न्यूरल नेटवर्क ठीक है unless different weight initiation strategy, weight initiation is an important step in trainings neural network because it will determine how the learning process begin. Poor initialization can lead to superconvergence and problem situation and exploding gradient. Zero initialization is the simplest method where all the method weights are set to 0. However, this approach is not effective because all neural learn the same features, leading poor performance, landing initializations, improve upon the biasing small random value to weight allowing neurons to learn on different features. More advanced method है कंपेयर करेंगे ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स को एसडीटी मोमेंटम आरएमएस प्रोब एडवांस से एप्लीकेशन एल्गोरिथम आर यूज्ड टू अपडेट द वेट ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स ऑर्डर टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ फंक्शन डिफरेंस होता है डिफरेंट एल्गोरिथम यूज डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है ये इंप्रूव कन्वर्जेंस स्टेबिलिटी ड्यूरिंग ट्रेनिंग ठीक है स्टैटिस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एसडीटी is the simplest and most widely used optimization method. Update of weight using for training example at time, which make it fast but noisy. Due to randomness, SGT may take a longer to converge and may oscillate around the optimal solutions. Momentum क्या होता है? Improve the open's SGT by adding a memory of previous update instead of relying only on the current gradient. It documents past gradient to accurate learning in the data. So corrections of directions and correction of directions help in faster conversion, reduce oscillation, especially in the region with the unsafe seven uneven surface. RMS prop का होता further improve optimization by adapting the learning rate for each parameter. Individually reduce the learning rate for parameter with larger gradient and increase it for those with small gradient. This makes it more suitable and effective for complex problems. Adam combines the advantage of both momentum and RS property by maintaining both the moving average of gradient and squared gradient, allowing it adapts a learning rate efficiently while maintaining the stability. ठीक है तो आज हम वीडियो में देखने वाले हैं कैसे आया डीप लर्निंग का कंसेप्ट है जो फर्स्ट यूनिट पे हम टॉपिक Adam Whitefield because it works well in most cases
and require less tuning. Overall, SGD seems simple, maintain a balance and efficient solution for deep learning. Okay. Critically evaluate ADAM optimizations. ADAM optimization is one of the most popular algorithms used in deep learning because it combines the strength algorithm deep learning because it same moment adaptive learning rate method. It adjusts the learning rate for each parameter individually while also considering past gradient, which lead to faster and more stable convergence. One of the major advantages of ADAM is क्या advantage is that work well in the large data set के हमें work करता है and complex model के साथ पे. It is less sensitive in the choice of learning and really often require less manual tuning to compare of the other optimization. Less chances होती है learning rate के लिए always manual tuning वो other optimization भी होता है. It is especially effective in a problem involving spare data to noisy gradient where a traditional method SGT may struggles. ठीक है. However, ADAM is not always but best choice नहीं रहता है. In some cases, especially in a very large scale problem when a generalize is important. SGT with a momentum may perform a better. ADAM may sometimes converge it to solution that is not optimal in terms of generalization, meaning it may not perform well on unseen data. ठीक है. Okay, therefore, the while ADAM is a highly efficient and widely used, it is an important to emulate its performance for a specific problem. It performs best in scenario where fast conversion is required, but alternative optimization may be preferred when better generation needed. ठीक है. ये अपना हो गया अपना एडम्स का. अब इसमें कंफ्यूजन मैटर्स भी होता है, रिलेशन मैटर्स भी होते हैं. कंफ्यूजन मैटर्स से क्वेश्चंस काफी पूछा जाता है गैस अपने क्वेश्चंस अपने एग्जाम्स में. कंफ्यूजन मैटर्स से पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें मेरे ने सॉल्व किया था. बट कंफ्यूजन मैटर जिसको अच्छे से समझ गया वो अच्छे मार्क्स इसमें अचीवमेंट ला सकता है. ओके. तो सबसे पहले हम कंफ्यूजन मैटर्स का डायग्राम देखने से पहले हम इसके डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं. A confusion matters a tool used to evaluate the performance of classification model by comparing predictive value with actual value. प्रिडिक्टिव वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू को क्लासिफिकेशन मॉडल्स परफॉर्मेंस होता है इसमें. और जैसे कि इट प्रोवाइड डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ करेक्ट एंड इनकरेक्ट प्रेडिक्शन. जैसे डिटेल ब्रेकडाउन होता है, करेक्ट हो गया इनकरेक्ट हो गया प्रेडिक्शंस पे. हेल्पिंग टू अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मॉडल्स परफॉर्मेंस में मदद क्या होता है कि इसकी मॉडल कौन सा परफॉर्मेंस कर रहा है इसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको हेल्प होती है. तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ फोर मेन कंपोनेंट्स. कंफ्यूजन मैट्रिक्स चार मेन कंपोनेंट्स पे बना हुआ है. ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव. ये चार कंपोनेंट्स कंफ्यूजन मैट्रिक्स का ढांचा बना हुआ है. ठीक है. ट्रू पॉजिटिव रिप्रेजेंट क्या कहता है, करेक्टेड प्रेडिक्टेड पॉजिटिव केस. मतलब ट्रू पॉजिटिव क्या कहता है, करेक्ट प्रेडिक्ट हुआ है पॉजिटिव केसेस है. ठीक है. वाइल ट्रू नेगेटिव रिप्रेजेंट क्या कहता है, प्रेडिक्ट करेक्ट प्रेडिक्ट हुआ नेगेटिव केसेस. और करेक्ट प्रेडिक्ट हुआ है, प्रेडिक्ट तो सही है बट जो केसेस क्या है नेगेटिव केस हुए. False positive occur when the model incorrectly predictive positive case. Model incorrect है but predictive case है. And false negative occurs when the fails to detect a पॉजिटिव केस. मतलब पॉजिटिव के डेटा फर्स्ट डिटेक्ट हुआ है बट पॉजिटिव केस है. राइट. इस तरीके से होता है. तो इस तरीके से डायग्राम के अकॉर्डिंग और अच्छे से समझ जाएंगे हम. देखो ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, एक्चुअल वैल्यू, प्रेडिक्टेड वैल्यू, टीपी, ट्रू पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव, ट्रू फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव. ठीक है. तो इस तरीके से कंसेप्ट डायग्राम पे बताया. तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्रेडिक्टेड क्लासेस पॉजिटिव नेगेटिव सब पॉजिटिव प्रेडिक्शंस होता है. ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, एक्चुअल वैल्यू प्लस डायग्राम हमने कलर मैट्रिक में समझ गया. वो हमारा इजी डायग्राम था. राइट. अब बात करते हैं एप्लीकेशन कॉल्स रिकॉल कर फायर स्कोर एक्सप्लेनेशन में. ये हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कोई कॉल है, रिकॉल्स देख सकते हो इस तरीके से डायग्राम्स पे किस तरीके से हमारे वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होते हुए बनते हुए हमारा आंसर राइट है 1.0 पे आया है. राइट. ठीक है. अब हम इसके नीचे देखेंगे. अब फॉर्म द कंफ्यूजन मैट्रिक्स सेवरल इवोल्यूशंस. जैसे कि अपने मैट्रिक्स था, ये हमारा डायग्राम था. ठीक है. अब यहाँ से हमारा डायग्राफ पड़े. अब स्कोर से रिकॉल हो गया, प्रिकॉशन कॉल रिकॉल प्रिकॉशन प्लस रिकॉल हमारा जो वैल्यू आंसर आएगा 2 into 0.9.92. ये फाइनल स्कोर हमारा वैल्यू आएगा. फ्रॉम द कंफ्यूजन मैट्रिक्स सेवरल इवोल्यूशन मैट्रिक्स कैन बी इवैल्यूएटेड. एक्यूरेसी measure the overall correctness of the models indicates and how many predicted positive cases are actually correct. Recall measure how well the model identify and positive case. F1 score provide balance probability in a precision and quick call. ठीक है. These metrics are important because accuracy alone may not be sufficient, especially in the balance and dataset. For example, in medical diagnosis, recall is more important because missing a disease can have one serious consequence. Therefore, evaluation metric must be chosen carefully based on the applications. ठीक है. अभी अपने एप्लीकेशन इस तरीके का एग्जांपल भी बताया है इंपॉर्टेंस में. और डिजाइन अ कंप्लीट ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी फॉर डीप न्यूरल नेटवर्क.
Design a complete training strategy for deep neural network involved addressing multiple challenges and ensure efficient learning and good generalization. This process begins with handling gradient related issues. The technique used such as a proper weight initialization using a relative acquisition function and batch elimination help preventing managing and exploiting gradient. ठीक है to handle overfitting regulation techniques such as proper altitude regularizations and data. Batch normalization with preventing managing and exploiting gradient. They handle overfitting regulation techniques such as dropout, altitude regulation, and data augmentation are applies. This method क्या होता है? This methods help the model generalize better by preventing and form memorize the training data. Early stopping can also be used to stop training when relative performance is starting to decrease. ठीक है? Choosing the right optimization, another important term is commonly used for vast convergence, while SGP with momentum may be prepares and for better generalization. Have a parameter such learning rate, batch size, numbers of which must be carefully turned into optimal processes. Evaluation metrics such as accuracy, precision, recall, and the 5-point square score are used to assess model performance. The metric provide a complete understanding how well the model is work both in training and validation data. Will designs a training strategy combine all the elements to create a balance and a effective model. By carefully addressing each aspect, the model becomes the most stable, accurate, capable, performance will learn real world data. ठीक है तो इस तरीके से हम कंसेप्ट कंप्लीट करते हैं सेकंड मिनट को गाइस आई होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस concept easily notes you are providing and getting the high marks and deeply understanding to offer the deep learning. Let's to continue watching the video, share the videos to your friends, and thank you so much. Please like and subscribe the channels and share to our friends and getting the more benefit to this channel. Thank you so much. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक पे एंड थर्ड यूनिट्स coming soon in this next videos. Okay, let's to watch in the videos. Thank you so much. Let's